Hey all, Ankit Kishore this side from Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 18,000 and 18,300 PEC respectively, and the running MTM is 28k. At a point of time I was down 46k. So actually what happened, why I came down so much? So two reasons were there. The first कि जो मैं एंट्री कर रहा था तो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आपको ये दिख रहा होगा, तो आई गॉट एंट्री एट 6.7 and 4.7 एंड राइट आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट सेकंड दे बोथ वर ट्रेडिंग 10 रुपीज. ओके, उसके बाद अगर आपको एंट्री यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने या दिस वन, तो एक 12 पे एंट्री हुआ, एक 7.65 पे हुआ है, उस समय 10 पे ही था. फिर भी मेरा एंट्री यहाँ पे भी खराब हुआ क्योंकि आई प्लेस ऑर्डर यूजिंग सेंसिबल एंड सेंसिबल वेंट इट take it into validation pending, and that's why I had to I got very bad entry there. Okay, but still that gave me like 4 points of loss. Okay, so instead I came down to 12k 14k loss. Now from there I went down to 46k loss, and reason was very simple. This particular movement I was not expecting at all. I was not expecting at all this kind of fall to happen, and that too till day low. I was expecting when this candle was forming, I thought okay, my market might sustain this range for a while today, because yesterday was a very volatile day. So I thought expiry at least in the first half will be a bit calm. So मैं उस तरीके से ही पोजीशन को प्लान कर रखा था, बट आई गॉट फायर्ड वेरी हार्शली, एंड वॉट एवर एडजस्टमेंट आई वॉज डूइंग इन बिटवीन वेयर जस्ट किलिंग मी. Okay, they were not working at all for me, so that's why I took the hit there. But yeah, can't help it. I mean, sometimes we have to take the hit. Okay, and the plan of action from here means in between what happened, 46k पे जब गया था तो मैंने अपने चैनल पे अपडेट दिया कि now I'm expecting कि मार्केट थोड़ा सेटल होगा. It was like here somewhere here, sorry, in this particular candle. और उसके बाद फिर ये सेटल हुआ, but I was quite risked off that point of time क्योंकि मैं 46k पे रन कर रहा था नेगेटिव. Okay, so it was not making sense to me to take any extra risk from there. एंड दैट इज द रीजन मैं वहां से बिल्कुल रिजर्व ऑफ होकर ट्रेड किया. इसलिए अभी तक आई कुड हैव इजीली मैनेज टू गेट आउट ऑफ दिस लॉस, बट नाउ द प्लान ऑफ एक्शन इज सिंपल. That is, I'm not going to take any extra risk, and at the same time I won't be looking for any profit. Even if this comes down to 10k negative by the end, I will be more than happy. और मैं अभी भी प्रीमियम है मेरे पास, it's not like I'm not having the premium, but still what is the plan of action from here is मैं यहाँ से रिजर्व ऑफ होता रहूंगा और ब्रेक इवन के जितना नजदीक जाकर मैं क्लोज करूं. आई एम नॉट एट ऑल एग्रेसिव विद सॉरी विथ माई अप्रोच कि मैं मुझे ग्रीन ही बंद होना है. इवन इफ आई विल क्लोज रेड, I just want red to be very small so that it should not matter to me a lot. Okay, this is the thing. And at the same time, yesterday I took a very bad hit of 31k. So I just don't want to repeat the same today also. So that is why my plan of action is, without taking any extra risk, if I will get any kind of decay, I will take it with both the hands. And if not, then it's better to close as close to break even as possible. So still I'm having these premiums. Now what is the adjustment plan? See, adjustment is not on the basis of premium, because premiums are behaving very weirdly. बहुत क्विकली वो 9 से 13 हो रहा है, 13 से फिर से 7 पे जा रहा है. तो इसलिए मेरा जो भी एडजस्टमेंट आज हो रहा है वो इट इज ऑन द चार्ट ओनली. ठीक है, तो चार्ट पे कहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो ये 7.5 को क्रॉस करता है, सॉरी इस जोन को क्रॉस करता है. मुझे लग रहा है ये ऐसे भी यहाँ पे काफी बार ये इसने अपने आप को सपोर्ट दिया था, अब उसे ब्रेक किया इसने. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट वहां से एक बार तो ये रेजिस्टेंस लेगा. ओके वेट, या यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा. टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है 12 चला जाए, मेरा लॉस फिर से 36 37 जाए, बट स्टिल आई फील कि मैं यहाँ तक तो वेट करूंगा. अगर यहाँ पे भी ये ब्रेक करता है तो या तो मैं उसे रिस्क ड्रॉप करूंगा, या फिर मैं 18,000 पी से थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट लूंगा. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन ऑन द अपसाइड. व्हाट अबाउट द डाउन साइड? डाउन साइड इज वेरी मच सिंपल. अगर ये 25 को क्रॉस करता है यहाँ पे, ओके, तो फिर मैं उससे रिस्क ऑफ हो जाऊंगा और उसके नीचे का ले लूंगा, या फिर कॉल के साइड प्रीमियम लूंगा. मेरे पास दो ऑप्शन है, बट जो एडजस्टमेंट का प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ आज चार्ट से है, ना कि प्रीमियम वाइज. ओके, प्रीमियम वाइज मैं ऐसा लगा रहा हूँ जब मेरे पास मैं बहुत एग्रेसिवली राइट कर रहा हूँ चीजों को. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे और इसे राइट करता हूँ, तो इन दैट केस आई विल पुट अ एसएल, बिकॉज आई नो दिस 15 कैन गो टू 22 एनी टाइम, एंड 7 पॉइंट ऑफ लॉस कैन बी वेरी बिग फॉर मी. सो आई जस्ट डोंट वांट टू बियर दैट इज वाई जब मैं बहुत एग्रेसिव प्रीमियम लूंगा अगर लिया in that case, so I will put the SL, although I'm not planning any such thing. I'm just planning simple thing कि इसका अगर 40-50% डीके 50-60% भी डीके मिल जाए, I will be more than happy. और आज hedges भी काफी expensive थे, तो yeah, this is the thing. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update time is 3:41 and I booked everything at
with 3.6k loss in this account, and in this account 4.3k loss. So more or less, obviously this will be in sync only. So see, from 1st of Jan, I will be giving update including both the profit. Means even in the community tab, if I will post any screenshot, that will be including of both these profit or whatever loss I will be having in both these accounts simultaneously. Okay, and the amount size will be 80 lakh for both of them, because 40 lakh is the margin I am using in both these accounts. So this is about it. And about a small account, wait, here I made 14.8k profit, okay, on the margin of 7.5 lakh. Why I'm telling you 7.5 lakh, आपको यहाँ पे 8.4 दिख रहा होगा. रीजन बिंग 90 के मैंने अभी जस्ट इस पे इनपुट करा था, क्रेडिट किया था. रीजन बिंग आई हैड टू टेक दिस निफ्टी 20, ओके. और मैं और भी अभी लेता रहूँगा. इसमें मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है और वो मुझे बढ़ाना है स्लोली इन स्टडी, बट नॉट हियर. मैं वेट करूंगा, थोड़ा और कभी फॉल आए तो वहाँ पे मैं लूँगा. अभी बहुत ही कम 300 क्वांटिटी मैंने लिया है. और या दिस इज अबाउट निफ्टी बीज. बट अबाउट दिस अकाउंट, सो आई बुक 14.8 14.9 यू कैन टेक, या 14.9 के प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 15k, which is like 2% on the margin used. So yesterday in this account also I booked a loss of like 12k. तो loss कुछ ज़्यादा book हो गया था कल, although I was just running with a loss of 4k at a point of time, but in a blink of eye I would say, means maybe when I was running, the MT was running with 4.5 or 5k of loss. All of a sudden in 1 minute I would say that went to 12k, and there only I decided, okay, I just have to cut it down without thinking about anything else or the adjustment. I just cut it down because मैं कभी भी 1% से ज़्यादा का इस अकाउंट में नहीं लेता हूँ, ओके, कभी नहीं. बट yesterday I booked a loss of 1.5%. So that's just because of the movement that happened. You must have traded yesterday. और वो जो मूवमेंट आया था उस पर सारे प्रीमियम दे सिंपली ब्लास्टेड, एंड बैंक निफ्टी में स्पेशली कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट आया था. सो आई जस्ट गॉट trapped in there. So yeah, this was about yesterday case, and today I booked almost 2% in here. So first I sorted C here, and then after that I started with this particular one, 42,900. उसके बाद मैंने C के साथ साथ P को भी सॉर्ट किया था, this one, wait, 42,800, sorry 41,800, sorry, yeah, this one. इन दोनों को मैंने सॉर्ट किया, ये कम क्वांटिटी किया हुआ था. बट लास्ट में मैंने क्या किया, कॉल को पूरा ही निकाल दिया. जब मुझे एक अच्छे प्रॉफिट के बाद वो ऊपर जाता दिखा, और उसके बाद मैं इसे पुट सेल करने लग गया. अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख लेना, यहाँ पे लास्ट मैंने सी को स्क्वायर ऑफ किया, फिर मैं सिर्फ उसे पुट पे ही रहा पूरे के पूरे दिन, और पुट को ऊपर करता रह गया. सो दिस इज अबाउट दिस स्मॉल अकाउंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन अकाउंट. सो in this account, in the morning itself, in the first clip only, I have told you that I was in a loss of 46k. Okay, and in the morning itself, so my loss, my risk appetite for the day was more or less was already met. Okay, so I couldn't have afforded to take any extra risk there, and that was the reason, even after seeing a very good premium, a very juicy premium, I was not coming close to the money. And at the same time, when I just made two, this is the second clip. In the first clip I have showed you, I guess, 18,300, and it was having very good premium. But see, I told you in that clip also कि even if I will get 40-50% of that decay, I will be more than happy. And that point of time I was running with 26-27k of loss. Okay, although I got much more than that, that is why I'm closing with just 3k of loss. This is what 1 point. Okay, and that point of time I was 8 point in loss. Okay, सो उसके बाद में बिल्कुल रिस्क ऑफ होता रह गया. जहाँ एक एसएल हिट हुए, जैसे उस समय एज फार एज आई रिमेंबर मार्केट वाज ट्रेडिंग हियर. सो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ आया, मेरे बहुत एसएल्स पुट के साइड गया, एक यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया तो दूसरा एसएल गया, फिर कॉल ने एसएल लिया. तो इट वाज अ कंप्लीट एसएल डे. एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई हर्ड एट 2:30 हेल्थ मिनिस्टर इज गोइंग टू say something about the ongoing situation, so I thought, okay, no, I won't be taking any risk. And that's why at 1:45 only I risked off my position completely, and I was just carrying 1 points. If I would have continued trading, I could have got much more than this, and I would have closed easily 10-15k profit. But just because of all those events,
and all those news, I thought no, better not to burn myself, and yesterday only I took a hit. So I thought today my focus should be on saving my capital rather than making any profit, and that is why मैं बिल्कुल switch कर गया और 1 रुपीज़ लेने के लिए मैं बैठ गया था. तो उससे कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं. ड्यूरिंग एवरेजिंग ओनली मैं थोड़ा बहुत डीके कैप्चर किया, उसके बाद आई एम क्लोजिंग विथ 1 point of loss, which is nothing, which is like break even in this account, also in break even, and in this account also break even. Okay, so yeah, this is the complete summary of the day. I haven't made any extra clips today because there was nothing more to tell you. Okay, because the clip which I made, उसके बाद मैं बिल्कुल रिजर्व ऑफ रह गया, 1-2 points कलेक्ट करने के लिए बैठ गया था, और एवरेजिंग में आई वॉज बिजी इन डूइंग एडजस्टमेंट एंड टेकिंग ट्रेड्स, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव अपडेट दैट टाइम. So now I'm just giving you a summarized update of what actually I did today. So yeah, I hope you got it. So yeah, I hope all the analysis and adjustment that I do are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.